we are going to start with a new chapter, that is cubes and cube roots. Cubes means in square. Square means what? What does the word square mean for us? When we were studying squares, what does this word meant? Yes? स्क्वायर का मतलब क्या था जब हम लोगों ने स्क्वायर्स पढ़े थे क्लास? नो आंसर फ्रॉम योर साइड. Okay, square means a number multiplied by itself. Similarly, cubes and cube roots in chapter 4, cubes mean product of an integer by itself thrice. Means if you are finding the cube of n, what does the answer will be? It will be if we multiply n by n by n 3 times. Understood? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Yes, ma'am. So square means multiplying it 2 times, the same number by itself by 2 times, and thrice, if we are multiplying it 3 times, it is cube. So Cube. let's see the question number 1. So there are 2 techniques of taking out cubes. One is what we just now discussed, is multiplying it 3 times. The second one is using an identity, which is your question 1 also of your exercise 4.1. Find the cube of the following using identity. As we have learned in previous chapter, one identity, a plus b whole square, that is a square plus 2ab plus b square. Yes or no? Yes, ma'am. Ma'am. Similarly, Yes, ma'am. in this chapter also for cubes there is also an identity. First note it down, you will be requiring a plus b whole cube, a plus b whole cube is equals to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. When you have noted, please tell me. Ma'am, noted. Now, first, so we will be using that same method, but now how many columns? In the previous method you saw 3 columns. Now how many columns will be required? कितने कॉलम की जरूरत पड़ेगी बताओ? अगर a square, हाँ बताओ please. Ma'am, 4. 4. Very good. Just analyze. 1, 2, 3 and 4. The first one will be column 1, second one will be column 2, column 3 and column 4. And in column 1 we will be writing a cube, in column 2 we will be writing a square b, sorry 3a square b, column 3 3a b square and column 4 b cube. Same as the previous one, yes or no? Just the values have changed, yes or no? Now, Yes, ma'am. let's take a number. 23 cube we have to find out. So, what will be A? A will be 2 and B will be 3. Yes or no? Same method? Yes, Just ma'am. the identity changed. So, we will be start finding out first what? A cube or B cube? Ma'am, B cube. Ma'am, B cube. Ma'am, B cube. B cube means multiplying B 3 times. What is 3? 3 into 3 into 3 is how much? 27. 27. Ma'am, 27. Now, we will be doing it orally, means in the paint, so that we can understand it fast. Okay. So, I have made 3 columns. You have noted, yes or no? Yes, So, ma'am. here will be 27, right? So, 7 will be with 7. Now, 3ab square, it was 3ab square means 3 multiplied by how much? Is 2 multiplied by 9, yes or no? So, it will be how much? Fast, calculate me and tell me, give me the calculation. Ma'am, 54. 54. 54. Good. So now this 2 will be added here. Yes or no? Same method. So how much is this? 56. 56. Right? Ma'am, Now, 56. it was 3a square b. 3a square b means 4 into 3. Yes or no?
3a square b means 3 into 12 into 3. Sorry, 3 into 4 into 3. Yes or no? And that is equal to how much? 36. 36. 36. 36. Right? 36. And what will happen? This 5 will be added? Yes or no? This 5 will be added Yes, to ma'am. 36. And that which is equal to how much? 41. What? How much we will Ma'am, get? 41. Ma'am, 41. 41. Now, here was a cube. A cube was 2. So 2 into 2 into 2. That is 8. Yes or no? Yes, And what ma'am. we do? We will add this 4 to it. Yes or no? Yes, ma'am. So how much I got? 12. Now 12. same as the previous column method, what we do? We take all the unit numbers together. Yes or no? We take all the unit position numbers together. Yes or no? And the last ones, whole set. Right? So what I am left with? So what will be the answer now? 1. Ma'am, I can't see the slide. You can see the slide. So I am telling you the slide number. 1. Why it's not converting red? I am writing with red and it's not converting to red. 1. 1000. 12,167. 6, 7. 1, 2, 1, 6, 7. Can you see the number now? Yes, ma'am. Okay. Yes. So is it clear that it is easy? As same as the previous one, but just the what has changed? Just what has changed? The identity has changed. Am I clear? Yes, Am ma'am. I clear? Yes, ma'am. Okay. Now can we let's. Will you be able to do the rest of the parts of 4.1? Question 1 4.1 के बाकी parts हो जाएंगे खुद से? Yes, ma'am. Okay. Let's move to question number 2. Nothing to explain more. नया कुछ बताने लायक है इसमें भी? Okay. Now, अब जरा देखो नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब निकालते हैं. फर्स्ट वी विल सी हाउ वी टेक आउट द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर. क्या करना चाहिए बताओ तो जरा. मतलब क्या है? If -1, did you remember this law? -1 to the power n is what? अगर इवन हो तो क्या हो, और हो तो क्या हो. ये वाला रूल याद है? Did you remember we discussed Yes. this rule? So what? Ma'am, if the power is even, then ma'am, the answer is positive. And if the answer is number is odd, the answer is negative. Yes. Now, -15 whole cube means what? -1 into, but just you don't have to elaborate it, but in general, please tell me if this does not mean this. क्या ये नहीं है इसका मीनिंग? Is it not the fact? Yes. -1 to the power 3 into -15 to the power 3. -15 का मतलब है Yes, ma'am. है या नहीं? So if it is the fact, then only 15. What should be the answer then? That means what? If we multiply 15 3 times, 15 into 15 into 15, we will get how much? First tell me. You Ma'am, have to also- 3,375. 3,000. Ma'am, 3,370. 375. And the sign will be plus or minus? Ma'am, minus. Minus. Understood how the negative integers are we find cubes of negative integers. Yes, ma'am. Any problem? No, ma'am. Now, can we come for the decimals? Same as we have done. First decimals, what we will do? First we will convert them into fractions. That is 0. Okay, first let me tell you how to find out. For example, I have to find out 5 upon 6. Okay, and I have to find out this whole cube. So what I will do? I will be separately finding out the cube of 5. Yes or no?
upon the same law which we use. See, we have to use the same laws as we have done in squares. But here instead of 2, the power is what? 3. 3. बात समझ में आई? सारे लॉ सेम है, सिर्फ 2 की जगह पावर क्या हो गई? 3. 6 हो गया 3. This law separately. So 5 cube is how much? 5 Ma'am, cube is 125. 125. Ma'am, 125. 125. 6 cube is how much? Ma'am, 216. ओके, फ्रैक्शन का नियम समझ में आया? फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, अगर माइनस के नंबर होंगे तो भी आप डील कर लोगे. If it is a negative rational number, then you can deal it or not? Yes, ma'am. Okay. Now, if you have understood the fractions, let's come and understand what about decimals. Decimals क्या हो? 505 for example, right? From your book only. What is this? If I convert this into a fraction, what number is this? 5 upon how much? 100. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. अच्छा, एक चीज बताओ, अगर 10 का स्क्वायर हो तो हम कितने जीरो लगाते हैं? एक जीरो के लिए 2 जीरो. यस और नो? Yes, तो ma'am. 10 का क्यूब होगा तो कितने जीरो लगेंगे? 3 Ma'am, जीरो. 3 zeros. इसका मतलब हर एक जीरो के लिए 2 जीरो स्क्वायर के केस में और हर एक जीरो के लिए 3 जीरो क्यूब के केस में. यस और नो? Yes, ma'am. तो क्या यही नियम इसमें, द सेम रूल विल नॉट बी फॉलोड हियर? 5 का तो क्यूब हो गया 125. यस, राइट. 1 का 1 हो गया. इस पहले जीरो के लिए कितने जीरो लगे? 1 2 3. दूसरे जीरो के लिए कितने जीरो लगे? 3. क्या हमारा क्यूब नहीं निकल आया? और नंबर क्या बन गया जरा बताओ. अब व्हाट इज द नंबर? यू हैव डन द एस्टिमेशन. द नंबर इज व्हाट? 0 point how many? 1 2 3 zeros. Yes, we have done the estimation. Yes or no? Estimation Yes, करना ma'am. तो- understood? The conversions. Have you understood all the conversions? पहले सारे कन्वर्जन जब तक क्लियर नहीं होंगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, इसलिए मुझे जानना है कि सारे कन्वर्जन समझ में आए या नहीं. अगर नहीं आए तो मैं रिपीट करूंगी कोई भी. Then only I can move ahead. बोलो बच्चा, कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगी. नो प्रॉब्लम. मैम डेसिमल 1. Which one? कौन सा वाला नहीं समझ में आया? मैम डेसिमल कन्वर्जन. एक और नंबर ले ले. Okay. Can we take one more? Okay. From your book only. 3.2 is given to us. Okay. So 3.2 will be 32 upon 10. Yes or no? This much is clear? यस मैम. Okay. 32 का क्यूब कितना होगा? What is the cube of 32? Find it out and tell me fast. Okay, I am giving you. I am having 3 2 7 6. 2768. Good. And what will be the cube of 110? How many zeros will be required? If one Ma'am, zero is 3. 3 zeros. One. Ma'am, 3. Understood this thing? You have understood, I think so now. Now we have to give our answer in decimals only ना. हम लोग को आंसर्स को डेसिमल में ही तो देना है कि फ्रैक्शन में छोड़ देंगे? हम डेसिमल. Decimals. कितना डेसिमल हो जाएगा? 3 जीरो है तो कितनी बार यहाँ डेसिमल नहीं पहुंच जाएगा? मैम 32.768. अब समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? मैम क्लियर. मैम क्लियर. और किसी को कोई कंफ्यूजन है? Any confusion? Just the conversion methods have changed, but added to, subtracted to, multiplied to, divided to,
सारे सेम है, राइट और रॉन्ग? Difference is that in case of squares we take 2 pairs at a time. In case of cubes we take 3 pairs at a time. Yes or no? Yes, Yes. Yes, ma'am. On the same principle, let's see what is the smallest number by which must be multiplied to so that the product is a perfect cube. Again, perfect cube is what? When we are using integers to get a cube. Yes or no? जब हम लोग इंटीजर्स का यूज करें क्यूब पाने Yes, के लिए, तो ma'am. हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट क्यूब. लाइक परफेक्ट में व्हेन वी यूज इंटीजर्स टू गेट द स्क्वायर, सो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर. सो लेट्स टेक द फर्स्ट नंबर. क्या कौन सी टेक्निक यूज होगी यहाँ? एक आइडिया बताओ. व्हाट आई शुड डू फर्स्ट? सो ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, just find out the prime factor of 4608 first. What are the prime factors of 4608? What are the prime factors of 4608? First, you will be telling me. Sub mein prime factorization method is must. So you have to get a hold on that. Okay, my dear students. Am I Yes, clear? ma'am. So you should have a hold on this thing. So what is the prime factors of 4608? Nine times 2 and 2 times 3. 9 times 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, and one more I am writing this side. No problem. And how many times 3? 2 Times. 2 times 3. 1. So now we will be making groups of 3 or 2. ये क्यूब है तो 3 का ग्रुप बनेगा कि 2 का ग्रुप बनेगा? Ma'am, 3. 1, 2, 3 means this 3 is 1, 3. We require one more 3. Yes or no? That should Yes. be my. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then this Yes, ma'am. 4608 will be a perfect cube. Understood? Same as square वाला है या नहीं? Yes, ma'am. Right? You know the writing method, so I'm not True. showing you the writing method because you have done in your squares also. So how much we require? What is the smallest number? 3 is the smallest number which is required to be multiplied with 4608 so that 4608 becomes a perfect cube. Understood? Cube. Understood the method? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? डिवाइडेड में इसी नंबर को, यही सपोज दिस वाज द सेम नंबर, तो डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? व्हाट शुड बी डिवाइडेड? डिवाइडेड में Ma'am, क्या होगा? 9. नहीं, डिवाइडेड में भी क्या होगा? इट शुड बी डिवाइडेड बाय 3 ना. अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा नंबर मिलेगा 9. क्या होना चाहिए डिवाइडेड में? सोच के बताओ. 9 डिवाइडेड बाय में क्या होगा? जो जितना अनपेयर है, राइट, जितना हमारा अनपेयर है हम उतना नंबर उससे डिवाइड कर देंगे. तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा नंबर हियर? 9 ना. 3, यस, 3 3s are 9. So 9. If we will divide 4608 by 9, whatever number we will get, it will be our required perfect cube number. So, बात समझ में आई? Am I clear? Yes, ma'am. 3 into 3 is 9. This is the unpaired number. Whatever numbers are unpaired, the result of that numbers will be what? Product of that number will be taken out and that number will be divided by the whole number.
and we will be getting the required. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. And one thing you have observed. What you have observed? That all the method are same as squares or not? Yes, ma'am. Just Yes, there ma'am. और क्यूब्स. अच्छा, एक चीज अब देखो, एक लॉजिकल चीज है, पहले समझो फिर मैं तुम्हारी बुक के क्वेश्चन पे आऊंगी, ठीक है? इसको कहते हैं पैटर्न क्वेश्चन, इसको कहते हैं पैटर्न कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर पैटर्न. अच्छा, बहुत इजी चीज है, जरा समझो. वन का क्यूब क्या होगा? वन से बनता है, One. राइट? अच्छा, अगर मुझे 2 का क्यूब लिखना है तो 8 होता है ना आंसर. और एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, 2 का क्यूब देखो, अगर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कर ले, सॉरी 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करें तो कितना आएगा? मुझे बोलो. 1 का क्यूब और 2 का क्यूब ऐड करें तो कितना होता है? 128. हाँ, 8. 8 कैसे मिलेगा? ओके, 8 चाहिए मुझे. 8 होता है 3 का क्यूब. अगर मैं सिर्फ ऑड नंबर्स का सम करूं तो 1 के बाद का अगला ऑड नंबर क्या है? 1 के बाद का अगला ऑड नंबर 3 और 5 है. 3 and 5. 3 and 5. 8. यस और नो? अब 3 का क्यूब देखो. 3 का क्यूब कितना होता है? 27, राइट? Yes, Right. ma'am. अच्छा, मैंने 5 ले लिया है. 5 के बाद का अगला ऑड नंबर क्या है? Ma'am, 7. 7. Ma'am 7 plus 9 plus 11. 9 प्लस 11. 11. ये पैटर्न समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 4 का क्या होगा? जल्दी से बताओ सर. Ma'am, Ma'am, 13 64. plus 17 plus 19 प्लस plus 9, 15 15 plus 17. प्लस 19. अब मेरी बात समझ में आई कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? Yes, ma'am. सो अगर मान लो 7 का निकालना हो तो हमें वी शुड नो व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 6 क्यूब. यस और नो? तो in this is a lengthy question, but for this we need a rough work. Yes or no? Yes, For ma'am. this you need a rough work, Yes, because you can't remember the numbers so much. So in your rough column just make a chart like this, and whichever number is required you will be getting the answer. कोई एडिशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ये फ्लो जानना है कि कौन से नंबर्स की जरूरत है. This is question number 6. Express the following cubes as the sum of consecutive odd numbers. Is it clear? Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो क्या हुआ? एंडिंग नंबर के बाद वाला ऑड नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कितने नंबर से जोड़ते हैं? जैसे जितने की रिक्वायर्ड है. पहले में 1 था तो 1 ही नंबर, सेकंड में 2 नंबर, 2 का क्यूब था तो सिर्फ 2 ही नंबर जोड़े, थर्ड में 3 का क्यूब था तो 3 ही नंबर जोड़े, फोर्थ में 4 का क्यूब है तो 4 नंबर ही जोड़े जाएंगे. अगर मान लो 7 का हमें स्टार्टिंग नंबर पता चल जाए तो इसका मतलब क्या हो? 7 में कितने नंबर और जोड़ने पड़ेंगे ऑड एक साथ? Ma'am, 7. 7. और मान लो 6, let's see, it's a 5. now let's count in hand. 19 पे एंड हुआ तो 5 अगले 5 नंबर कौन से होंगे? जल्दी बताओ. 19 पे अगर एंड हुआ तो अगले 5 नंबर होगा 21, 23, 25, 27 and 29. 29. so 5 cube is done, right? 6 cube will start from 31. yes or no? 6 cube will Yes, start ma'am. from 31. so 31, 33, 35, 35, 37, 39, 41. 41. so 7 cube will start from. 43. Understood the concept? Yes, Understood yes, the ma'am. concept? Now, and okay, let's see the last one. Prakshit makes a cuboid of
plasticine of sides 5 to 5. That means height, length and breadth. How many each cuboids will be needed to form a cube? How will you do this question? Huh? How many? So, first we can find out the volume. Yes or no? First you can find out the volume. What will be the volume? Volume is what? Height, length multiplied by breadth multiplied by height. Yes? So what's the volume? First tell me. Class? Length, breadth and height is given to us, na? So 5 into 2 is 10. 10 into 5 is how much? 50. 50. Volume is 50. Done. This much done. Right. Sorry. Then 5 into. So cuboid is what? For counting the cuboids, we will be needing 2 dimensions. Yes or no? Yes, So ma'am. now let's 50. Now factorize 50. Fast. Factorize 50. Ma'am, 2 into 5 into 5. Ma'am, 2 into 5 into 5. 2 into 5 into 5. It was simple because it was given in this form only. Now, to make a cube, how much we will be needed? कितने की कमी है कि एक क्यूब बन जाए? ये नंबर क्यूब बन जाए, कितने की कमी है? अभी हम लोग ने किया है, बताओ. Ma'am, 1 5 and 2 2s. हाँ? 1 5 Ma'am, and 1 5 and 2 2s. so means what? 5 means इतने क्यूब 2 into 2 into 5 होगा, राइट और रॉन्ग? सो 20 क्यूब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये पूरा क्यूबॉइड बन जाए. और अगर 20 क्यूबॉइड्स हमें मिल जाए, ऐसे 20 क्यूब्स मिल जाए, लिखा है ना, तो अगर हमें क्यूब्स के फॉर्म में इसको भरना है, तो ये परफेक्ट क्यूब अगर बनाना है इस क्यूबॉइड को, तो हमें और 20 क्यूबॉइड्स की जरूरत है या नहीं? क्यूब्स की जरूरत है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. So it was a logical question. Same type of question. Let me see the writing question. You can get it here. Yes. Question number 6. Please come to question number 6. Example. Same type of question is given to you. Working method समझ में आया? So understood the working method? Same है, just they have used the logic of cube and cuboids. It's same like how, what is the smallest number to make it a perfect cube? Yes or no? Logic they are using, which is what is the smallest number required to make it a perfect cube, because they want to make this cuboid a cube. Yes or no? Are you hear Yes, me? ma'am. Understood. So true and false and last one will be done by you. Okay, and in the next class we will be doing cube roots, and I will by Monday you will be getting the syllabus for the unit test. Okay. Okay, ma'am. So thank you and have a nice. Thank you and have a nice day. Thank you, ma'am.